गिरीश जी नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज बात करेंगे नमस्कार। I2U2। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम दिया जिसने भी ये सजेस्ट किया है। इट हैज बीन नॉमेनक्लेचर बड़ा अच्छा ढूंढा इन लोगों ने। और इंडिया, यूएस, इजराइल, यूएई। पहली बात तो बड़ा क्लियर ऐसा लग रहा है कि एक सुपर पावर है अमेरिका जिसका मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस है। यू नो वो अपने एग्रीमेंट करता है वहां पे, अपने ग्रुप बनाता है, अब्राहम अकॉर्ड किया उन्होंने। इंडिया कहाँ से इसमें प्ले अप कर रहा है? और इंडिया को रियली कोई एडवांटेज है कि नहीं है? ओवर टू यू। Thank you, sir. It's a very interesting thing because what is happening now, earlier there was a trend of bigger group, which is G20, G40, G, so many groups of number of groups. But what was happening, things were not moving in a bigger group. If the number of participant or countries are more than 10 or 20, what is happening, sometime or other, their clash interfere, and then they are not able to move with the pace they are looking at what for that groups were formed. So this we have seen in non-aligned movement and other countries movement where the number looks very attractive. There are 100 members in non-alignment or like that, but basically it was like a moving elephant, which is not the speed which public is looking, or the way world is moving. Their speed is not that much. So they had started with a smaller group. But what was happening, if it is only two people are there, then again it influence is restricted. So they have started with a like-minded like group in WhatsApp. We are having a like-minded group of people, same way like-minded group of countries which are not having so many diversified interests, and for a particular reason they are grouping together. The same thing is like I2U2. Yes, your question is very right. Where does India fit into this? Basically, it is meant for Israel and Middle East. Israel was the only country which is having a difference from the major, you can say, nations around them or the neighbor countries to them, whether it was Egypt, Saudi, or whether it is Jordan, or whether it is UAE and all those Middle East countries. So earlier it was in a way, if we look at up to some 15, 20 years back, if people were having a visa of Israel, then he was or she was not allowed to enter into Middle East countries because a person having stamps of so and so is not allowed to enter into this. This was the situation. However, things has changed in last 15, 20 years, and Israel has been accepted as a okay, now there's no other option, but we have to live with it and we have to work with it. So things had moved with the pressure of, you can say, US, and Israel has also accommodated many of those things. So Middle East countries has changed their look towards Israel, and they have accepted it. Okay, instead of fighting, why not we join and then move together for the stability of the region? So that was the reason. गिरीश जी एक बात बताइए, अब्राहम अकॉर्ड हुआ और ट्रम्प को काफी क्रेडिट गया उसका। अच्छा, उसके बाद ईरान की जो न्यूक्लियर एम्बिशंस हैं वो हमेशा एक पॉइंट रहती है मिडिल ईस्ट में। और सब, अगर आप देखो तो सब ईरान से डरते हैं। ओवरऑल साइज भी अच्छा खासा है, और उनके जो रिपब्लिकन गार्ड्स हैं उनकी रेपुटेशन भी अच्छी खासी खराब है। दे कैन क्रिएट न्यूसेंस वैल्यू एनीवेयर इन द मिडिल ईस्ट, और एनीवेयर मिडिल ईस्ट के बाहर भी। तो एक तरीके से सऊदी अरबिया, टर्की, ईरान, मैं कहता हूं कि ये तीन पावर सेंटर हैं। और सऊदी अरबिया, ये जो अरब नेशंस हैं, सऊदी अरबिया उनका लीडर है, और मेरे ख्याल से इकोनॉमी भी उनकी बाकी के कंपैरिजन में थोड़ी बड़ी है, तेल भी ज़्यादा है उनके पास। तो जैसे जैसे ईरान का इमरजेंस होता है या ऐसा लगता है कि उसके पास न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर वेपन्स आने वाले हैं, ये सारे किसी न किसी ग्रुप में जाने को तैयार रहते हैं। ये मैंने अरब नेशंस का खास तौर से देखा। और मुझे लगता है कि इसराइल को जैसे ये लोग क्लोज लेके आ रहे हैं, क्योंकि इसराइल का और इनका दोनों का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि किसी न किसी तरीके से ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देना है। और अगर बाई एनी चांस वो एक्वायर कर लेता है तो उसमें इसराइल की फिर हेल्प करनी है कि वो उनको डिस्ट्रॉय करे, और यूएस से भी उसमें पार्टनर बन जाता है। और मैंने पहले एक वीडियो भी बनाया था जिसमें उन्होंने, आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे एयरफोर्स ड्रिल करती है ना, F-35 से ड्रिल की थी।
और ये ड्रिल हुई है कि से अराउंड 1.5 साल हो गया ये ड्रिल हुए, कि कैसे वो कम्युनिकेशन कैसे सेटअप करेंगे, कैसे टारगेट एक्वायर करेंगे, कैसे फायर करेंगे, कौन से वेपन फायर करेंगे, और कौन कौन से अरब नेशंस उनकी हेल्प करेंगे। एंड आई गिव यू गारंटी, जितने भी अरब नेशंस हैं, सऊदी अरबिया या यूएई या बहरीन, ये सब आपको एक साथ मिलेंगे इस न्यूक्लियर बम को अगर ईरान एक्वायर करता है तो। ये तो एक बात होगी। लेकिन आप देखो, इन्होंने किसी ने भी ये नहीं कहा कि जो ग्रुप है इसका कोई सिक्योरिटी डायमेंशन भी है। इन्होंने अभी तक बिल्कुल इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की है, और उसमें फिर ऑब्वियसली इंडिया आ जाता है। सिक्योरिटी डायमेंशन कोई बात नहीं कर रहा, जबकि सबके दिमाग में एक सिक्योरिटी डायमेंशन इनहेरेंट है। अब मुझे आप एक बताएं कि जो सऊदी अरबिया है वो इस ग्रुप में कब शामिल हो सकता है? और अभी जो बिडेन की विजिट हुई है वहाँ पे, वो तो अच्छी खासी, कोई अच्छी तो गई नहीं वो, जो मार्केट रिपोर्ट आ रही है। तो आपका क्या ख्याल है, सऊदी अरब के बगैर ये ग्रुप कुछ एक टेंजिबल बियरिंग लेगा? You have rightly pointed out कि ईरान का एक जो पोजीशन है मिडिल ईस्ट में, या यू कैन से इन द मुस्लिम वर्ल्ड, he wanted to be a leader of the Muslim world. Whereas Saudi Arab, so far, because of the custodian of the two holy mosques, they are having the position to hold the leadership. And fortunately for them, they are also having the richest oil reserve among all the Middle East countries, where they are having around 10 million barrel kind of a per day capacity, which is almost 3 times of what Iran is having the capacity of producing. Oh. So from that angle, Saudi is in a better position financially to take care of their other countries. However, there is another factor within that Muslim country. There is a Shia and Sunni. So Saudi is representing the Sunni Muslim leadership, whereas Iran is trying to take as a Shia leadership. And in the Middle East, there is a good combination of Shia and Sunni, but Saudi, UAE, and these countries, Kuwait, are the Sunni-dominated nations, whereas Yemen is a mix of Shia and Sunni, and there is a similar situation in other Middle East countries. So apart from, I think the leadership issue is also behind this tussle between Saudi and Iran, which is known to all, publicly known. Now, let's see, Israel is in a position to counter all our defense challenges in the Middle East region from any country, whether it is from country A or country B. Let's not name, because all are sometime or other they had a fight with them, but they have given them position, and that Iran is technically, in some cases, even having better technology than US in some of the spying and other technology wise. If you look at some of their technologies, quite in demand, but it's very limited, and they are taking advantage of it, and they are in a position to balance the security reason requirement in the Middle East region. So Israel and US. Now, to support Israel and this thing, UAE and Saudi have opened up, and later on other countries are also opening up. So to start with, this is the UAE, Israel, India, and Israel and US. They are the 4 countries which is there. But later, sooner or later, I am sure other country will also join. When? Because as I said, there is other factor, religious factor. They wanted to be dominated by one of their sect, which they believe. So from that angle, Saudi and Egypt are also likely to be partner in future. But you have rightly said, earlier it was a Quad kind of a thing, but China is also having a good influence in the Middle East region. Yes. The moment Quad comes, China see it as a security threat to their movement. And it's a issue with China to come out of that mindset. That's why its name has not been given Quad. Earlier it was a Middle East Quad kind of a things was coming up, but then name was dropped. And in the October meeting 18th October 21 meeting, it was not given the name of I2U2. This is a name given recently when this virtual summit happened. And so there in the focus area, there are 6 focus areas. As of now, security is not directly
part of it, but you can say in a atmosphere like say a six area which they have identified, security will automatically become more or less when the investment is there. So all those countries who are partner in this thing, security indirectly will be coming along with that six focus area. And India, as you rightly said, what is their position? India act as a market for these countries because all these countries are rich in either natural resources or in technology. Means like whether if we take it Israel or US, they are good in technology point of view. UAE and Saudi, if let's say for future and other things, they are good in natural resources. So India is providing them a stability and a market. So it's a win-win situation for the countries who are joining. So it is a good for India as well as for the countries like Israel, UAE, and Saudi, if suppose they join, and US to be part of this plan. Like food security. Food security is one of the focus area in this, and Middle East is lacking in that. So they are depending upon import of food. So India is one of the major food, exporter to these countries, and it is helpful to them. So it's a win-win situation to all the countries who are participating. या वेरी बिग पॉइंट एक्चुअली इंडिया फूड सिक्योरिटी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूटर रहने वाला है। और इंडिया में अभी ये जो इनकी सबमिट हुई है इसमें $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इस ग्रुप की तरफ से आएगा जो इंडिया में फूड पार्क्स हैं वो बनेंगे। सो दैट वाज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक हाइब्रिड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सॉर्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट लगेगा, दैट विल बी इन गुजरात। तो काफ़ी लोग ये बात भी कर रहे हैं कि मोदी ने बाकी सब तो किया न किया, लेकिन गुजरात के लिए एक प्रोजेक्ट जो है वो I2U2 से लेके आ गया। और फूड पार्क तो ऑब्वियसली यूपी में भी लगेंगे, आपको ही पता है, काफ़ी वो दैट इन्वेस्टमेंट इज़ क्वाइट बिग। अच्छा, मुझे एक बात से बड़ा सरप्राइज हुआ, इनफैक्ट ये न्यूज़ तो कहीं लीक आउट नहीं हुई। स्टेट टू स्टेट लेवल पे इंडिया ने इजराइल को अभी काफ़ी वीट जो है वो एक्सपोर्ट किया है। आप समझ सकते हैं, उनको यूक्रेन से आना था वो नहीं आया, तो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है। तो इंडिया एक्चुअली एक बफर स्टेट वहाँ पे बना हुआ है। अब एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अमेरिका का क्या इंटेंशन है। बायलेटरल रिलेशंस भी होते हैं, इंडिया के इजराइल से हैं, इंडिया के यूएई से हैं, भाई ग्रुपिंग बनाने की क्या ज़रूरत है। और ऐसे ही अमेरिका के यूएई से भी हैं, आई थिंक दे आर गेटिंग F-35 आल्सो। मेरे ख्याल से उनके पास F-35 भी हैं और रफेल भी हैं बाय द वे यूएई के पास, और इनके पास F-35 यानी कि इजराइल के पास तो बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी यूएसए की रहती ही है हमेशा। मेरा जो पॉइंट था कि इजराइल को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिडिल ईस्ट में दिलवाना, और अभी बीच में ऐसा लग रहा था कि ईरान का जो थ्रेट है ना वो थोड़ा सा मिटिगेट हो रहा था कि एग्रीमेंट होने ही वाला है। बट 2014 में जो इन्होंने एग्रीमेंट किया था, न्यूक्लियर डील जो ईरान के साथ हुई थी 2014 में हुई थी, जो बाद में ट्रंप के टाइम पे ही विड्रू आउट ऑफ दैट। तो उस एग्रीमेंट के बाद से और अभी तक सऊदी अरबिया के या अरब नेशंस के यूएसए से जो रिलेशंस हैं ना वो अभी तक उस लेवल पे नहीं आए जो कि उससे पहले लेवल पे थे। यानी कि प्रॉब्ली यूएसए वाज आल्सो प्लेइंग सम गेम के ईरान को प्रॉप अप करके कुछ करके, अभी भी ऐसा लग रहा था कि एग्रीमेंट हो जाएगा, अभी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वॉट एवर मे बी देयर बट दैट कमिटमेंट विद इजराइल इज देयर कि इस न्यूक्लियर वेपन को ईरान के अंदर डेवलप नहीं होने देना है किसी भी सूरत में। दैट कमिटमेंट बिडेन हैज जस्ट गिवन। सो दैट वाज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। अब इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर आ जाता है, वो प्लेयर है चाइना। और चाइना, ईरान, रशिया, ये तीनों इस टाइम पे एक एक्सिस ये डेवलप हो चुकी, और ईरान अफर्ट कर रहा है काफ़ी हद तक कि नॉर्थ कोरिया के थ्रू चाइनीज़ वेपन टेक्नोलॉजी लेके किसी न किसी तरीके से डेवलप कर ले। इंडिया का मतलब एक तरीके से आप देखो तो बड़ा बैलेंसिंग सा एक्ट रहता है इंडिया का। ईरान के साथ भी तेल तो मंगाता ही है और रशियन ऑयल भी अभी ईरान के थ्रू आएगा। एक बैलेंसिंग एक्ट इंडिया का रहता है। और इंडिया एक चूँकि मिलिट्री पावर भी है और इकोनॉमिकली भी डेवलप हो रहा है, तो प्रॉब्ली दे वांट टू हैव इंडिया एज ए बफर स्टेट। अब इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट, अभी जो सऊदी अरबिया की रिलेशनशिप यूएसए के साथ,
ये आप कैसे देखते हो, क्योंकि ये रिलेशनशिप क्रिटिकल होने जा रही है। और जितने भी ये नेशंस हैं, अरब नेशन, सब आप देखो तो अगर यूक्रेन रशिया क्राइसिस में भी इन्होंने एक न्यूट्रल सा स्टांस ले लिया, पेट्रोल के प्राइसेस में भी इन्होंने न्यूट्रल सा स्टांस ले लिया। अगर ओपेक की मीटिंग करेंगे तो ओपेक प्लस की मीटिंग करेंगे जिसमें रशिया भी आएगा, यू नो, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो आप कैसे देखते हैं कि सऊदी अरब और यूएससी की जो इक्वेशन है वो कब इंप्रूव होगी, और वो इंप्रूव होगी कि नहीं होगी? और ये बेसिकली एक एनर्जी सिक्योरिटी का इशू है। इनफैक्ट लोग आजकल बात कर रहे हैं कि आजकल इंटरनेशनल सिक्योरिटी तो कोई रही नहीं, इट इज बेसिकली एनर्जी सिक्योरिटी। Look at relation with US and Saudis were very good when Trump was in power. So it also depends which party, Republican or Democrats, who's ruling US and thus indirectly is having an impact in the countries. Like India also is having, suppose who's ruling in Britain, conservative or labor and other things. So you can say कि on a average, we always find that we are having a good relationship when Trump was there. But of course, Mr. Modi has done a very good balancing act, and then with the new administration also, which is earlier was not looking so sympathetic or so favorable to India, but now with in spite of all this thing, we are having a very good relationship with the US. So earlier when Trump was in power, Joe Biden and the parties were blaming Saudi Arabia directly for the Khargousti case, which has happened, the murder which has happened in the US Saudi citizen in that embassy. So now things are watering down. It is not that totally position has been changed. So slowly things are happening. And since the accusation was directly to the ruler, MSB, Mohammed Salman bin, the ruler, in de facto ruler, as you can say, he's the crown prince as of now because his father is a ruler, but he's running the Saudi. So until unless there is a change from the US side and also from the Saudi side, so things may take some time, but it is improving than what was there some 4 or 5 years between Joe Biden and the Saudi. Again, let's understand one more point. Irrespective of which party is ruling in US, they can't deny they can't offend the Israeli interest in US, irrespective of whosoever is in party, whether Democrats or Republicans. So Israel is having a very high influence in the US election. All their high thinker or think tank and other things are having a too much of influence from the Israel, and none of them can afford to antagonize Israel Jewish lobby in US. So whichever party comes, they have to take care of the interest of the Israel, and Israel is technically good enough to take care of its own security. Let us accept it. It is not the situation some 30 years back when it was very much necessary for them to have a US support directly, but now they have reached to a stage, I'm talking from the defense point of view or the technology point of view, they can defend themselves against all odds with their neighbors, the nearby neighbors, including Iran. So now it is in the interest of the Middle East to take help of the Israel, which is a historical. I am not. Let's not go into a in party which is ruling A or B. This is a historical between happening from the last 1980 or so when new government taken over in Iran after the departure of Shah of Iran. So things are different. Now, keeping that into mind, it was necessary. It is necessary for them to realign themselves and work towards closely in that region for the stability. If that part is missing, for that it is necessary that Israel is part of their solution. And UAE and Saudi, they are, as I said, they are very liberal as far as working is concerned now. I am not talking of the earlier. Now in UAE, you can say it has replaced in many parts of Singapore. And many of these Western and US companies, they have shifted their base to UAE.
in Dubai and other part, and taking care of the entire Southeast Asia and Middle East region and part of the Africa from UAE, and they feel much better, to work because it is near to Europe as well as from work point of view there, and that's the reason UAE and Middle East region has changed their Friday, Thursday of leave to Friday, Saturday, so that working days availability and other thing is there. And as far as this recent summit is concerned, they have committed $2 billion for the food अच्छा, टू security. बिलियन डॉलर्स ओके. $2 billion. So now what is happening, it is not confined to one state. It all depends upon how progressive or what is the thinking of the Indian state, because land is a matter of the states. Center can provide that, policies, but implementation is in the hand of the states. Now, if we look at from the point of view, so there are many states, whether it is Punjab, whether it is Haryana, whether it is UP, whether it is MP or Andhra, where good in for agriculture products, if we look at, so they can take this advantage, and land will remain with the states only. This money will come and that they get a market also for their products for them. And this will basically develop an infrastructure in that state. Basically, the purpose of this agreement is to minimize the wastage of the यस. food. यस. So that is, in other words, developing the infrastructure for the agriculture production, agriculture distribution system and transportation system, so that wastage in the food production and transportation, and right from production till whether it is distributed within country or outside. So that will be a win-win situation, and Middle East country will get benefit because they are getting a sort of a assured supply from India. या यू आर राइट. Similarly for energy. बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है. अब इसमें मुझे जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, मतलब दैट पर्टेन्स टू बेसिकली इंडिया यूएस रिलेशनशिप एंड इंडिया रशिया रिलेशनशिप. अभी तो हमने खैर उनसे एक्स्ट्रा ऑयल ले रहे हैं बिकॉज दैट इज बेसिकली प्रैग्मेटिज्म. वो तो इकोनॉमिक सेंस है कि हम उससे ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल ले रहे हैं क्योंकि वो डिस्काउंटेड रेट पे दे रहे हैं. इट इज एज सिंपल एज दैट. लेकिन साथ में आप देखो भी S-400 के अगेंस्ट में जो यूएसए का सीनेट में और उनकी जो उसमें कांग्रेस में जो अभी धीरे धीरे करके वो वेवर आ जाएगा, कैट्सा के अगेंस्ट में वेवर आ जाएगा. आप देख लीजिएगा इसको. जबकि टर्की को वो वेवर नहीं मिला. टर्की डिड नॉट गेट दैट वेवर विच इंडिया गॉट. तो इसके मुझे लगता है कि दो रीजन है. एक तो इंडो पैसिफिक में ये बेसिकली जो क्वाड इन्होंने बनाया, और क्वाड एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे करके बन जाएगा. अच्छा, इसके अलावा आप देखिए तो चाइना कैसे काउंटर कर रहा है उसको, ब्रिक्स के थ्रू कोशिश कर रहा है काउंटर करने की. और ब्रिक्स में अभी मेरे ख्याल से इजिप्ट ने, सऊदी अरबिया और टर्की, ये भी ब्रिक्स के आसपास अभी आ जाने वाले हैं. ये अप्लाई कर दिया इनफैक्ट इन्होंने, दो ने तो. मेरे ख्याल से सऊदी अरबिया और इजिप्ट ने तो अप्लाई भी कर दिया. टर्की भी अप्लाई कर देगा. तो टर्की तो खैर दोनों तरफ ही रहने वाला है. ईरान ने वो जो संघाई कोऑपरेशन काउंसिल है उसमें अप्लाई कर दिया. तो सब एक्चुअली आजकल आप देख रहे हो तो सब जो है ग्रुप्स में जा रहे हैं, अलायंसेज बना रहे हैं, ग्रुप्स में जा रहे हैं. और जो यूएसए ने ये जो वेवर इंडिया को दे रहा है S-400 खरीदने के बावजूद भी, इट शोज कि यूएसए को ये पता है कि स्लोली एंड स्लोली इंडिया इज गोइंग टू ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम रशिया. maybe because of China factor or maybe because of so many factors. और इसीलिए आप देखोगे कि एम्यूनिशन, ये हथियार जो हम वेपन्स, एम्यूनिशंस एंड टेक्नोलॉजी, वेपन टेक्नोलॉजी, ये सब अमेरिका धीरे धीरे करके इंडिया को देगा. सप्लाई चेन में इंडिया इंटीग्रेट होगा. जहाँ जहाँ पे भी लैकुना है, और लैकुना बहुत है, वी आर नॉट एट पार विद चाइना, तो मैन्युफैक्चरिंग बेस भी वो नहीं है अभी. मगर धीरे धीरे करके मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया और यूएसए दे विल कम क्लोजर. और ये जो एग्रीमेंट है बेसिकली, कोई भी आप अलायंस बनाओ शुरू में वो डेवलप तो होता नहीं. आप धीरे धीरे करके स्टेप्स लेते हो, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट देन सिक्योरिटी इज आल्सो इंक्लूडेड. तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट टाइम में भी अनदर 2 years 3 years, ये जितने अलायंसेज हैं अपने आप में एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं.
अब मल्टीपोलर से ये तो नहीं होगा कि सब ही पावरफुल होंगे, बट एटलीस्ट इंडिया विल बी वन ऑफ द टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ऐसा मेरे को लगता है। और ये जो Actually, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, स्पेस सिक्योरिटी, जो ये सब इसमें डिस्कस हो रही है I2U2 में, और जो अलायंसेज बन रहे हैं, इंडिया हैज़ गोट ए वेरी गुड चांस। इनफैक्ट एक कमेंट में देख रहा था ट्विटर पे, तो किसी ने कहा पाकिस्तान को क्यों नहीं लिया उसमें, I2U2 में पाकिस्तान को क्यों नहीं लिया, इंडिया को क्यों लिया। पाकिस्तान मतलब, तो किसी ने कहा भाई कि उसका चलो इसराइल के साथ अभी वो नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है शायद इसलिए। बट किसने साथ में ये भी लिखा कि अगर इसराइल उसको एक्सेप्ट कर लेता, क्योंकि इसराइल को कोई इशू जनरली होते नहीं, तो उस हालत में भी पाकिस्तान क्या कंट्रीब्यूट करने वाला था, अनस्टेबिलिटी कंट्रीब्यूट करता वहां पे, दैट सॉर्ट ऑफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया डिप्लोमेटिकली जो गेम का लेवल है ना इंडिया का, वो अब ऊपर आ गया, मुझे ऐसा लगता है। व्हाट डू यू से, मतलब डिप्लोमेटिकली हम थोड़े क्लूड अप हो गए अभी पहले के कंपैरिजन में। actually, there is a saying that you should be at a right place at right time, to be listened and to be heard properly. It is not that India was not there, but India was not considered to be a powerful enough to influence another thing. Now people are saying that India leadership is giving a great direction as far as that stability is concerned, whether it is financial or food security or other thing, because we are providing. And they have also seen during the COVID the way things were happening against Indian leadership and other thing, the way leadership had acted. So indirectly, those who are criticizing that policy, now they have accepted it. Same thing is with Israel. Israel is also having a very firm leadership, irrespective of which party wants there, but their policy remain unchanged. This is a very good part. So India and Israel are having a very good relationship from the last 15 years or so, 10, 15 years, we can say. And that is the reason probably Israel was also want that country like India should be a part of this group, so they can get a support to spread the points, the agenda of this group, or the focus area of this group can be done with the like-minded countries. As you rightly said, if the countries like Pakistan or Iran comes, it is very difficult to implement those policies which may not be seen the same way, the way friends see each other. So from Israel point of view and India point of view, similarly, India is also having a very good relationship historically from with UAE and other region. Now, Egypt is also one of the having a good relationship with India. So we are hopeful if Saudi and this they are also joining it, it will be a better for the stability and better stability in our area, because none of the countries who are developing or working towards the improvement of their people and their all those things, they want stability. Unless stability is there, their investment will not be there. So it is in the interest of the India also that we should have a stability in the surrounding area. It's not only to our neighbor surrounding to Pakistan and Bangladesh and Nepal, but beyond that. And once it is there, Middle East stability will help India in, because it's a good market for us. Middle East is a good market for India, as well as you can see. Roughly millions of people are working there in various countries within region of this, and it is in our interest that it is stable, and then it is good for all those countries as well as for India. आई एग्री विद यू। इनफैक्ट अभी जो लखनऊ में लुलु माल जो हुआ खोला है, योगी जी ने उसको इनॉग्रेशन किया, तो उसके बाद से जो डिट्रैक्टर्स हैं ना, दैट इज फ्रॉम एनी साइड, फ्रॉम सनातन धर्म साइड और फ्रॉम मुस्लिम साइड, उन्होंने एक तरीके से एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की है कि हाँ, जो मिडिल ईस्ट का इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे सेफ नहीं है। आई एम श्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या योगी जी इस तरह के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, इस तरह के जो एजिटेशंस हैं, उनको ढंग से काउंटर करेंगे, सो दैट वी अट्रैक्ट मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मिडिल ईस्ट। They have got investment, and we have got the places to invest, we have got the market, and that is how we should look at it. Security angle बाद में आने ही वाला है, वो तो अपने आप ही आएगा। तो with that thing, गिरीश जी, I look forward कि it is going to be very very good alliance, and it is going to be very successful alliance. So thank you so Don't much. worry about Yeah, don't any worry other? about Yeah. why I'm telling you, because this is the
newspaper or that kind of a noise is in India. You won't find such kind of a noise in the Middle East, all this thing. It is not only the first time, other time also, whenever there was an investment was happening here, they count, left liberal, some media people, they were writing against India, why Saudi and UAE supporting India when against this temple happened, Gyanbapi temple. But such things were not at all in the any of the news in this Middle East region. So they know how to handle such people, and you will never find such people are going in anywhere into these countries. They only go to Western or Europe to counter or to make their tweet and other thing, but nothing happens in the Middle East. They know how to handle, and they handle. You must have seen how they handled it in Qatar and Kuwait. So Oh the same yes. thing is there. So it definitely they know how to handle it better than what we are doing it. Yeah. Griji, thank you so much. It has been a wonderful discussion. It's really a pleasure to interact with you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for listening to this conversation with Griji. Hope you liked it. Please like, share, and subscribe. I will see you in next video. Thank you.